पुत्र है और इसलिए भारत माता के लिए जिएंगे मरेंगे। लेकिन भारत में भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है? वो हिंदू समाज है, क्योंकि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। Dalits, tribals, everybody is threatened by unemployment, by price rise, by crimes against women, by overall disharmony in the society. Are they not worried about that? In fact, they are guilty for this disharmony. ये खतरा भारत के मुसलमानों को, हिंदुओं को, दलितों को, आदिवासियों को, सिखों को, ईसाइयों को है। वो किससे है? नरेंद्र मोदी और मोहन भगवत से खतरा। Ladies and gentlemen, a very good evening and thank you for tuning into a brand new episode of The Nation Wants to Know. I'm Deepthi Sachdeva. The nation wants to know that what is really wrong in a call for unity. Is that call for unity divisive? Is that against any particular community? Why is Assuddin Owaisi saying what he's saying? Remember, in the country for the longest time, there has been an attempt to whip up a kind of a sentiment. To say that, you know, if you're an Indian Muslim, you must be really, really scared of Narendra Modi and Amit Shah. There have been political parties and leaders saying that for the longest time. Muslims in the country are close to about 20 crore. And at their rate of growth, they are obviously expected to grow. There are a lot of avenues. There are a lot of other schemes that the government has kind of delivered to them, irrespective of the fact that whatever religion you belong to. But then, there are some people today who have a problem with the RSS chief's call for unity. He says this is a Hindu Rashtra. Ladies and gentlemen, what else do you call a country that has more than 80% Hindus? Now, Mohan Bhagwat is speaking of a cultural identity, a religious identity that binds all of us together. Is that wrong? Should we ask political parties their stand on Hindu Rashtra when Kamal Nath, who was once the face of the Congress in the run-up to the Madhya Pradesh election, also said much the same? He said, और क्या बोलेंगे? 80% से ज़्यादा हिंदू है, तो but obvious हिंदू राष्ट्र है. So there is a split in the Congress, because then on the other side, you also have those who speak about vote jihad. Vote jihad. That is a term again that was used by a senior Congress neta's niece who's a part of the Samajwadi Party. But Rahul Gandhi, silent on that. Not a word on vote jihad. Is that not communal? Or is the call for unity more communal? Because remember, there is a particular definition of the Hindu Rashtra that might not be conducive to certain political parties. Because they want to tell you that in a country that is predominantly Hindu, the minorities need to be really, really scared. They are endangered. That is the kind of narrative that they speak about, that they profess day in and day out. But let's tell you that we believe in the idea of India, the idea of Bharat, that is completely secular, that has a space for everyone. Narendra Modi today has said, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे. Remember, it's a very sharply politically loaded statement. But let's also quickly rewind to the vote jihad concept. This is a term that has been used by political leaders, by political parties of late. Did anyone have a problem? Absolutely no. They have a problem with the call for unity. But I want to rewind to the 1st of May 2024, and we'll also bring up those graphics on our screens to tell you whether there are political parties that have been using this to divide and rule, exactly what the Britishers used to do not very long ago. So this is the 1st of May 2024. Her name is Marialam. She's an SP leader, but the niece of a very senior Congress leader. Listen in to what she said. बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ, एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संगी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं. बहुत शर्म आती है जब मैंने आज ये सुना कि कुछ मुसलमानों ने आज यहाँ पर बैठ के मुकेश राजपूत की मीटिंग कराई. मुझे लगता है समाज से उनका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए. इतने मतलबी मत बनो कि
बच्चों की जिंदगियों से खेलो, हमारे बच्चों की जानों से खेलो। And this remark that, remember, was made in the May of 2024. If you're wondering, did that have any electoral impact? So I'll just tell you to get reminded of what happened during the Uttar Pradesh results. You had the minorities voting en bloc for the India Alliance. So is that an attempt also to divide and rule? Who's trying to do that? Those are important questions. And the question that I asked, that is this a concerted attempt and a false narrative that has been created vis-a-vis the Hindu Rashtra symbol that has been used? And what is the Congress's own stand on Hindu Rashtra? Let's say good evening to Karan Verma, who's joining us. He's an author. Professor Geeta Bhatt is a political analyst on the show. Feroz Bhakt Ahmadji is a former chancellor of the MANNU. He's joining us from the national capital. Haji Mehraduddin Rangres is a spokesperson for the AIMIM on the show. Khalikur Rahmanji is a political analyst. He leans towards the Congress. And Kishore Tiwari ji, the spokesperson of the Shiv Sena UBT, is completing our panel. So Khalikur Rahmanji, let's begin by asking you that in the run-up to the Lok Sabha election, you had Maria Alam speaking of a vote jihad. Is that, what the country needs? So the country needs to have a call for unity. Her remarks are totally unacceptable, and we don't subscribe to that ideology. That's the ideology of the RSS. And see, when you talk about the Hindu Rashtra, Hindu nation, that would directly contradict the principles which are enshrined in its constitution, in our constitution, and particularly in relation to secularism, democracy, and the protection of the individual rights. And the very preamble of our constitution, which explicitly states that India is a sovereign, socialist, secular, and democratic republic. And then this also is in contradiction to the Article 25 of our Constitution, which gives the freedom of religion to everyone who lives in India. Khalikur Rahmanji, whatever you're saying today, was that said by the India bloc? Because you utilized this to garner your votes. But Maria Alam said कि संघी सरकार को हटाना है. Did you people protest like you're protesting against the call for unity today? I'm telling you, we don't subscribe to those statements, whichever party it makes, whether it's made by the Samajwadi candidate or it's made by any other party. But as far the Congress is concerned, Congress does not subscribe to that ideology, because that ideology is explicitly the ideology of RSS. Do you support the Hindu Rashtra call? Do you believe that Bharat is a Hindu Rashtra, sir? No, because India belongs to everyone. India belongs to everyone. So, and let me so tell when you say Hindu Rashtra, who's saying that this is not a Rashtra that belongs to everyone? Who says that? See, what do you mean by the Hindu Rashtra? First Exactly. Of all, what is your definition of a Hindu Rashtra? Yeah, I mean, you have to give the definition. The Hindu Rashtra means it is like you are snatching away the rights of all the other religion, and then you want everyone to practice Hinduism. Which is where is this definition, sir? Khalikur Rahmanji, where is this definition from? That is my understanding of. That is your understanding. Exactly what I said. There are certain political parties, sir, in the country who've been trying to whip up this narrative because they don't tell you that it's a Hindu Rashtra because you have more than 80% Hindus in the country. But what works for you, and let me quickly get in Haji also here, Mehraduddin Rangres, before I get in Karan and also Kishore Tiwari ji. Now, Haji Mehraduddin Rangres ji, आप मुझे ये बताइए that अगर ये कहते हैं RSS के प्रमुख कि सबको इकट्ठा होना चाहिए, अगर हम बटेंगे तो उससे किसी का फायदा नहीं होगा, तो इसमें हिंदू मुसलमान का एंगल कौन ढूंढता है, सर? देखिए, लगातार बीजेपी 80-20 की बात करती है, शमशान कब्रिस्तान की बात करती है, कपड़ों से पहचानने की बात करती है, और ये जो बटेंगे और कटेंगे वाली बात जो है, ये तो ना तो इस देश का कोई हिंदू खतरे में है, ना कोई मुसलमान खतरे में है. अगर कोई खतरे से, जो इनको खतरे में ला रहे हैं, मोदी जी और आरएसएस है. आरएसएस को इस देश में बैन हो जाना चाहिए. हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है, आप ये बात मानते हैं सर? आप ये बात मानते हैं ना कि ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में, देश खतरे में नहीं है? बिल्कुल. चलिए, तो यहाँ तो वैसे ये लोग हैं क्योंकि इनकी राजनीति जो है ना वो इसी चीज पे चलती है कि किसी तरीके से कि हिंदू मुसलमान हो जाए बात,
शमशान कब्रिस्तान की बात हो। आप ये बार बार कह रहे हैं मोहन भागवत जी कि ये देश हिंदू राष्ट्र है। अगर ये हिंदू राष्ट्र है तो फिर ये संविधान क्यों है, फिर ये देश का कानून क्यों है, फिर आपका जो चौथा स्तंभ क्यों है मीडिया? तो इसका मतलब तो नहीं नहीं, अब हिंदू राष्ट्र में संविधान की कोई मान्यता नहीं होगी, ये कहाँ लिखा है सर? ये कौन सी किताब है या कौन सा ऐसा साइट है जो आप लोग गूगल करके पढ़ के तो आते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर सोर्स नहीं बता पा रहे। खलीकुर रहमान जी ने भी कहा कि मेरी पर्सनल डेफिनेशन है, तो ये भी आपकी पर्सनल डेफिनेशन हुई ना? ये डर कौन फैला रहा है सर? मैडम, मनुस्मृति चाहते हैं, बीजेपी और आरएसएस जो है मनुस्मृति लाना चाहती है, देश के संविधान को खत्म कर देना चाहती है, देश की जो यूनिटी है, जो भाईचारा है, जो विविधताएं हैं इस देश की, उसको खत्म कर देना चाहते हैं। इनका अच्छा, जब लगातार ये चाहते कहा जाता है सर, जब वोट जिहाद कहा जाता है, चाहता हूं, आपको लगता है कि वो कम्युनल है या नहीं है? मैम एक मिनट, अच्छा मैम सुनिए, भाजपा चाहती है कि एक ही भाषा हो, एक ही खाना हो, अच्छा, एक ही कपड़े हो, एक ही चुनाव हो, एक ही धर्म हो, एक ही नेता और एक टाइम की पड़ जाओ। अच्छा, आप अपने फोन में ये देख रहे हैं, किसका संदेश आया है कि भाजपा की सरकार लगातार तुष्टीकरण की। आप ये बताइए, 20 करोड़ की जो मुसलमान की जनसंख्या है, उससे 80 करोड़ के हिंदू भाइयों को जो डराया जाता है, इस पर जो हमारे हिंदू भाई हैं वो क्यों स्टैंड नहीं लेते? वो क्यों नहीं कहते कि हम तो कोई खतरे में नहीं है? कहता है कि कोई मुसलमान हमारी जो है मंगलसूत्र नहीं छीन रहा, कोई मुसलमान हमारी बेटियों को नहीं याद दिखा होगा रहा, सर, कोई अभी मुसलमान गणेश मंदिरों में नहीं उत्सव घुस हुआ रहा। है, तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं नैरेटिव जो जहां फैलाया पर जा रहा है। नहीं, जहां पर सर पूरा जो गणेश का प्रोसेशन निकलता है गणेश जी का, और आपको याद होगा ये तो कर्नाटक की घटना है जहां पर गणेश जी को एक पुलिस वैन में ले जाना पड़ा था क्योंकि इतना उत्पात मचाया हुआ था वहां पर। लेकिन हिंदूज ने कभी इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं किया, ना किसी ने कहा है कि खतरे में है, ये देश सबका है सर। इस देश को कौन बांटना चाहता है? करण, शुड the opposition today is saying Narendra Modi needs to make his stand clear whether he supports a Hindu Rashtra or not. So, Deepti, first of all, Khalikur Saab and Haji Saab, both of them did not quote sources, but I will quote your source. It's the Supreme Court in its 1995 judgment, which has said, and I'm quoting, Hindutva means Indian culture and not merely religion. When we talk about our country's main motto, it is Satyamev Jayate. It has come from the Upanishads. Does it segregate? आपके ओवैसी जी भी जिस कॉन्स्टिट्यूशन पे शपथ लेते हैं उसमें भगवान राम की चित्र बना हुआ है in the page of the fundamental rights. When he takes an oath in the parliament, it is written Dharma Chakra Parvartanai. It is again a line from our Upanishads. The Supreme Court's main motto is Yato Dharma Tato Jaya. So the fact is, this is a way of life. This is about our culture. And you want to just merely look it through the narrow prism of a mode of worship. So there is a lot more to it. And then Mr. Haji says कि अरे ये डराना चाह रहे, अरे आपके अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, उन्होंने कहा था 20 करोड़ 80 करोड़ पे भारी पड़ जाएंगे, वारिस पठान ने ये बात कही थी। तो कौन ये सब बातें कर रहा है? Who is talking about dividing? Vote jihad, Hindu Muslim. This is your AIMIM's fundamental policy. हाजी जी, इसका क्विकली जवाब दीजिए सर, जो करण ने सवाल उठाए हैं। देखिए, मैं करण भाई की बात से जो है इत्तेफाक नहीं रखता। उन्होंने लगातार हमारे 15 मिनट की बात करी। जो हमारे ओवैसी साहब है वो जेल भी गए और उस मुकदमे में वो बरी भी हुए, मगर नीतीश राणे जो है और एक जो है नवनीत राणा है, ये खुलेआम वहां पर मुसलमानों को मारने और काटने की बात कर रहे हैं और 5 मिनट के लिए पुलिस हटा देने की बात कर रहे हैं। उनका बयान उन्होंने कहा प्लीज नियंत्रण रखिएगा। कंडेम करना चाहिए। हाजी जी, देखिए, अगर वोट जिहाद पर आप लोगों को दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर कोई ये कहता है कि सबको एक साथ हो जाना चाहिए, उस पर कैसे दिक्कत हो सकती है, मुझे अभी तक नहीं समझ आया है। बिफोर आई गेट इन गीता जी एंड ऑल्सो किशोर इन टू दिस कॉन्वर्सेशन, फिरोज बख्त अहमद जी, आपके भी कोई बहुत मतलब अगर आपसे पूछा जाए सर, आपको लगता है कि यहाँ पर आरएसएस चीफ सबको डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं? वो कहीं ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ देश हिंदुओं का है, मुसलमानों का देश नहीं है। I mean, is there a sense that you get out of listening to this comment? Now listen to me. I have heard all my learned friends from Khaliq Saab to Karan to Haji ji, and I have heard all my worthy friends. Now let me tell you one thing. As far as India is concerned, एक शेर मैं हाजी जी आपके लिए कोट करता हूं और ये याद कर लीजिए। हिंदुस्तान के बारे में शेर ये है,
मुझको सुकून मिलता है मेरी अजान से, ये देश सुरक्षित है गीता के ज्ञान से। गीता जी भी यहाँ बैठी हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इफ यू कॉल इंडिया अ हिंदू स्टेट और हिंदुत्व स्टेट, okay, if there are 80 crore Hindus here, now this might be a Hindu state with secular constitution where Hindus and Muslims have gelled well through eons, through centuries, like sugar and milk. First thing. Second thing is, I mean, as far as Dr. Mohan Bhagwat is concerned, he has tried to build bridges between all the communities, between Hindus and Muslims, between Hindus and Hindus, and Muslims. He has, I remember, once he said that without the imagination of Indian Muslims, we can't even, think about India. And Muslims have contributed so much. I think it's this diatribe of Hindu-Muslim in everything. It is not something which will make India what we call Jagat Guru. India is on a very fast track of becoming Jagat Guru. It will become Jagat Guru if people like Karan, people like Haji Rangres, people like me, you and all, we are all on the same side of the table, right? And, indulging into it is Hindutva, it is India. India doesn't follow Sharia law, it doesn't follow the Vedic law. It Correct. follows the largest handwritten constitution of Dr. Mohan Bhagwat, right? So India is a very peaceful country. Let her live peacefully. Let us not bring this diatribe of Hindu-Muslim. India, whether it is Hindus or Muslims, they have since for a very long time they have been living like friends, right? And I will also tell, lastly, आखिर में मैं रंगरेज साहब आपसे कहूंगा, आप मेरे छोटे भाई की तरह हैं, ये हिंदू मुस्लिम के झगड़े में ना पड़े। हिंदुस्तान को जो वसुधैव कुटुंबकम की मतलब फिलॉसफी में यकीन रखता है, इसको लेके मेरे साथ चलिए आप। मैं आपके कंधे पे हाथ रख के आपके साथ चलना चाहता हूं। ठीक है किशोर तिवारी जी, देखिए ऐसी मतलब जब कुछ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज एंड नेताज की दुकान ही इसी तरह चलती है कि सबको डिवाइड किया जाए, बिकॉज दैट्स द बेस्ट वे टू डिवाइड एंड रूल. That is why you can have, an SP leader talk of a vote jihad. No one has a problem, but they have a problem with the call for unity. Is this hypocrisy, or there is something deeply dangerous, Kishore Tiwari ji? Is this also about weaponizing the Muslims of the country to say that this is the best way to defeat the BJP? देखिए मैं आपको बताता हूं, जिस हिंदू धर्म की बात कर रहे थे मोहन भागवत जी, वो कह रहे थे कि ये देश की जो संस्कृति है वो हिंदू संस्कृति है. देखिए ईसा के पहले भी और इस्लाम के पहले भी यहाँ जो संस्कृति थी तो वो सनातन संस्कृति थी, और सनातन संस्कृति एक शाश्वत संस्कृति है. और अभी आप देखते हैं तो कंबोडिया ले लो, इंडोनेशिया ले लो, वियतनाम ले लो, या हमारे आजू बाजू के देश ले लो, तो अब केवल हिंदू संस्कृति और हिंदू लोगों एक सुरक्षित जगह है, वो भारत भूमि है. तो ये भारत भूमि को हिंदू राष्ट्र घोषित करो, यह शिवसेना की मांग थी. लेकिन मैं एक बात करता हूं सचदेव जी, जब मोहन भागवत कहते हैं कि किसी कास्ट का, किसी ग्रिड का द्वेष ना किया जाए, तो अभी हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं, हम मराठी लोगों की अस्मिता का सवाल है. हमारे उद्योग गुजरात में ले जा रहे हैं. मैं बताता हूं कि ये क्या हिंदुओं का रक्षण कर रहे, हम मराठी मानुस है कर हमें दूसरा भाव दिया जा रहा है, हमारे उद्योग निकाल के ले जा रहे हैं. मोदी शाह हमारे आक्रांता बन गए. मैं चाहता हूं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय वाला हिंदुत्व हम चाहते हैं, जो भगवान गौतम बुद्ध ने कहा तो था. आपको लगता है कास्ट सेंसस होना चाहिए सर? कास्ट सेंसस होना चाहिए? क्या बोले? आपको लगता है कास्ट सेंसस होना चाहिए सर? देखिए मैं कहता हूं, भारत के अंदर अभी जो आर्थिक विषमताएं आ गई है और 2% लोगों के पास ही सारी संपत्ति और संसाधन चले गए हैं, तो वो हिंदू जो 98% है, जिन्हें जीने का अधिकार भी
अबाधित नहीं है कि उनको तो, उनके लिए तो मोहन भागवत बोले ही है। मोहन भागवत ने जो कहा वो आप है ना, ये योगी जी और मोदी जी के साथ मत बताइए। मोहन भागवत ने जो कहा है वो शाश्वत सनातन संस्कृति को का ध्यान दिया है। और मोहन भागवत जी से इंडिया अलायंस में रहते हुए हम शिवसेना वाले कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र रहे और हिंदुओं की एक आश्रय भूमि रहे, इसकी बात हम करेंगे। ठीक है किशोर जी, महाराष्ट्र में चुनाव आने वाले हैं, चुनाव घोषित होने वाले हैं, तो बिल्कुल ये देखिए वोट के हिसाब से ही सब तोल मोल के बोलते हैं। Geeta ji hasn't spoken. I want to quickly get her into this conversation. Now, Geeta ji, when you look at everything that has been said vis-a-vis the Hindu Rashtra, the debate, is this even a debate today? Or, you know, there is just a consideration for vote. This is about creating a narrative. This is about fear-mongering. You see, you know, when Sarsang Chalakji when mentions that Bharat is a Hindu Rashtra, he in his, you know, if you listen to his deliberation, he has mentioned that it is not just a matter of upholding the, you know, Hindu tradition and Hindu values, which actually means being, you know, secular, being assimilative and being inclusive. I mean, Syrian Christians, they came to this land almost in 4th and 5th century, running away from their country, and the Indian kings at that time, they gave shelter to them, protected. And there are Jews who came, then the Syrians who came. So you see, we very well know that the whole concept of being, when we say that it's a Hindu Rashtra, it is the Hindu culture that we need to uphold, which talks about being secular, which talks about listening to others, having a conversation and resolving, and that is what Mohan Bhagwatji said in his address. And he mentioned that we need to look into the fact that in the society, the people who are on the marginalized section, we need to look into the welfare and, you know, upbringing of all such people. And just to put, you know, in 2 lines, then Mohammad Chagla, who was the education minister in Nehru's cabinet, he, in his autobiography, Roses in December, he writes that, you know, I am by birth, I am a Muslim, by culture, I am a Hindu, and by education, I am an Englishman. So that itself, you know, this thought of that, the culture of this country, where Dayanand Saraswati went in Kashi and asked to have a Shastra with hundreds of pandits on what basically Ved stands for. It's something which actually defines that this is a country which believes in listening to others and accepting others. Absolutely. But at the same time, this can be upholded only when this culture is preserved, and this what are the danger bells, that is what is happening, what happened to you know, in Udaipur, it happened to Kanhaiya Lal, and what has happened in Dasna is something which is ringing the danger bells. Yes, and you know, Geeta ji, there are a lot of layers to this story. Apologies only for want of time, I'm jumping in here. But Khaliqur Rahman ji, आपको भी याद रखना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे, that is a politically loaded statement. And if you can't act against vote jihad, किशोर तिवारी जी, महाराष्ट्र में चुनाव है, लेकिन फिर भी देखिए देश के साथ एक स्टैंड तो लेना होगा ना. What do you call a country that has more than 80% Hindus? Only for what of time? Geeta ji and all gentlemen, I'm thanking you so much for joining us. We are tracking that story much more also when we come back on the other side of this quick break.